everyone. I am a Professor Nilesh Anandwani, owner and lecturer of Anandwani Biology classes. Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Professor Nilesh Anandwani from Anandwani Biology classes. हमने NCERT में से यूनिट नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल के ऊपर हमने बायोमोलिक्यूल इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिए हुए। अभी हमारा आज का जो वीडियो है वो है प्रोटीन। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोटीन क्या होते हैं और अमीनो एसिड क्या होते हैं और एक प्रोटीन के अंदर कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बेसिक्स अबाउट द प्रोटीन एंड बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। In this video, I am going to only teach you protein and amino acid and detailed description, classification of protein. And next video from this one, I will teach you primary, secondary, tertiary, and quaternary structure of protein. So without wasting our time, let's look towards the protein. So let's talk about protein. So first of all, what is actually protein? What is actually protein? Protein can be defined as it is group of organic compound. Protein can be defined as it is a group of organic compound which is long chain, which is long chain of amino acid. ये सबसे सिंपल और सबसे प्यारी डेफिनेशन है प्रोटीन की। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। नाउ व्हाई इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड? जैसे हमें पता है कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपोज्ड बाय द कार्बन। सो प्रोटीन आर कंटेनिंग कार्बन, दे आर आल्सो कंटेनिंग हाइड्रोजन, दे आर आल्सो कंटेनिंग ऑक्सीजन, एंड इन प्रोटीन देयर इज वन एडिशनल ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोजन. As we have studied in carbohydrate is generally made by 3 structural elements such as a carbon, hydrogen and oxygen. Protein are also containing carbon, hydrogen, oxygen, but in additionally protein are also containing nitrogen. तो प्रोटीन में नाइट्रोजन एक एडिशनल कंपोनेंट है, माइट भी उसमें फास्फोरस और फॉस्फेट ये भी कंपोनेंट उसमें ऐड हो सकते हैं। प्रोटीन की और भी एक डेफिनेशन है जिसे हम बोलते हैं it is a polymer, it is a polymer of amino acid. अभी अगर दोनों डेफिनेशन को रिलेट किया जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं। इसमें क्या दिया गया है? इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड. व्हाट इज लॉन्ग चेन? साइंटिफिकली लॉन्ग चेन्स आर कॉल्ड एज अ पॉलीमर, and this is a long chain of amino acid. This is a polymer of amino acid. Polymer means long chain only. I'll describe you. For example, this is amino acid. This is amino acid number 1. This is amino acid number 2. This is amino acid number 3. This is amino acid number 4. This is amino acid number 5. तो मान लो ये 5 अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 अगर इन सबको साथ में ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? इट विल टर्न इनटू द पॉलीमर और यू विल कॉल इट एज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड. दोनों से बनता क्या है? बनता प्रोटीन ही. Protein was first time studied and discovered by the scientist called as a Berzelius. Now come to the some properties about the protein. That you can say how many you can say protein, how many protein present in living system. So क्वेश्चन दिखने में एकदम सिंपल लगता है, छोटा है, लेकिन क्वेश्चन है पूरी डाइवर्स ग्रुप को कवर करता है. प्रोटीन एग्जैक्टली लिविंग सिस्टम में कितने ये बताना काफी मुश्किल है, नियर बाय इम्पॉसिबल है. लेकिन साइंस में हम इम्पॉसिबल किसे नहीं कहते, लेकिन ये काफी नियर बाय इम्पॉसिबल जैसा है. इट इज यू कैन से गेसिंग पार्ट इज दैट नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर देयर, ह्यूमन बीइंग्स आर देयर, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर, नंबर ऑफ एनिमल्स आर देयर, नंबर ऑफ प्लांट्स आर देयर. तो एग्जैक्ट प्रोटीन की नंबर हम बता नहीं सकते, बट स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कैन कंटेन अराउंड 2000 प्रोटीन, बट ह्यूमन बीइंग कैन कंटेन अराउंड 1 lakh प्रोटीन.
A bacteria can contain 2000 protein and human being can contain 1 lakh protein. तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ह्यूमन के अंदर यूकेरियोटिक एनिमल होने के बावजूद भी, करोड़ों सेल होने के बावजूद भी हमारे बॉडी में 1 लाख प्रोटीन है, and bacterial cell which is a prokaryotic and only made by single cell but still have a 2000 protein. तो प्रोटीन में डाइवर्सिटी और वेरिएशंस काफी है. प्रोटीन इज most diverse molecule in living system. डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी नीट में यह भी पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में या तो लिविंग सिस्टम में या तो अर्थ में कौन सा सबसे डाइवर्स मॉलिक्यूल है. सो आंसर इज प्रोटीन. Protein is considered to be the most diverse molecule. Now, if you talk about the, you can say molecular weight. So, अगर देखा जाए कि molecular weight प्रोटीन का कितना होता है, तो प्रोटीन का molecular weight हमें डिटेक्ट करने के लिए सभी प्रोटीन को स्टडी करना पड़ेगा. And not to study all protein, you can study Hb. What is Hb? Hb stands for hemoglobin. तो hemoglobin का molecular weight होता है 68,000 kDa. What is kDa? kDa stands for kilodalton. तो hemoglobin जो एक स्टैंडर्ड प्रोटीन कहला जाता है, उस hemoglobin का molecular weight होता है you can say 68,000 kilodalton. तो प्रोटीन की क्वांटिटी इक्वल है बैक्टीरिया में, या तो समझ लो कोई भी जनरल बैक्टीरिया में 2000 है और ह्यूमन बीइंग के अंदर 1 लाख प्रोटीन पाए जाते हैं. मॉलिक्यूलर वेट होता है 68,000 kilodalton. ये हुआ अभी मॉलिक्यूलर वेट. Which type of protein is present in which you can say living organism? So it depends on the type of organism. For example, हमारी human being के अंदर nails में और skin के अंदर केराटिन प्रोटीन पाया जाता है. अब हमारे you can say heart के अंदर मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए. सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपोप्रोटीन पाया जाता है. लेकिन ये सभी के सभी प्रोटीन कंपल्शन नहीं है कि प्लांट में भी हो. Just because in plant body myosin protein is not used, so plant body will not produce a myosin, but the protein which will be present in you can say plant body will not be used in the animal body or will not be used in the human body. So सबके प्रोटीन अलग अलग होते हैं और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? This property is known as the host specificity. Means a particular kind of a protein is present in particular living organism. This property is known as the host specificity of protein. Now we will try to describe general structure of a protein, and then we will move towards the classification of protein. So let's move towards the general structure of protein. Okay, तो अभी हम देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. Now, as I said that protein is a long chain of amino acid or protein is a polymer of amino acid. So we have to describe structure of protein related to the amino acid. So I'll just show you. For example, this is amino acid number 1. This is amino acid number 2. This is amino acid number 3. And this is amino acid number 4. And this is amino acid number 5. ठीक है? तो मान लो 5 अमीनो एसिड है हमारे सामने. अगर अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर एक ही पाया जाता है तो उसे हम बोलेंगे पेप्टाइड. और अगर एक प्रोटीन के अंदर 2 अमीनो एसिड होते हैं तो उसे हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड. और अगर प्रोटीन के अंदर 3 अमीनो एसिड है सो देन वी विल कॉल ट्राइपेप्टाइड. एंड इन केस इफ अमीनो एसिड्स आर मोर देन 3 देन वी विल कॉल पॉलीपेप्टाइड. If amino acid is a 1 then it is called peptide. If amino acid is a 2 then it is called dipeptide. If amino acids are 3 then it is called tripeptide. If amino acids are more than 3 it is called as a polypeptide. Now
each and every amino acid has a two-sided chain, like a one-sided chain. One-sided chain is known as a C terminal. One-side chain is known as a C terminal. Now, what is a C terminal? C terminal stands for carboxyl terminal. C terminal stands for carboxyl terminal, क्योंकि एक अमीनो एसिड के एक साइड पे COOH होता है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप होता है. COOH मींस कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरे साइड को हम बोलते हैं N टर्मिनल. अभी N टर्मिनल का मतलब क्या होता है? N terminal stand for you can say amino, you can say there is a amino terminal. Now N terminal, there is a NH3 group, that's why it is called as amino terminal. C terminal, where there is a COOH group, means at upper side there is a you can say amino group, at lower side there is a carboxyl group. Sorry, I meant to say there is no upper and lower. ये तो मैंने यहाँ पे upper और lower ड्रॉ किया हुआ है. एक अमीनो एसिड के एक साइड पे कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है और वो अमीनो एसिड के दूसरे साइड पे अमीनो टर्मिनल होता है. कार्बोक्सिल टर्मिनल मतलब वहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, और अमीनो टर्मिनल मतलब अमीनो ग्रुप है वहाँ पे. और एक अमीनो एसिड और दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड होता है हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड. That bond is called as a peptide bond. Now you can see that there is a C terminal, there is a N terminal. There is peptide bond, then there is C terminal, N terminal, then peptide bond, then you can say C terminal, N terminal, then peptide bond, C terminal, N terminal, peptide bond, and you can say C terminal, N terminal. तो ऐसे सभी के सभी अमीनो एसिड में C टर्मिनल, N टर्मिनल दूसरे C टर्मिनल से जॉइंट हो, उसके पहले उनके बीच में आता है पेप्टाइड बॉन्ड. तो सभी के सभी अमीनो एसिड C N पेप्टाइड बॉन्ड, C N पेप्टाइड बॉन्ड, C N पेप्टाइड बॉन्ड, ये सभी के सभी अमीनो एसिड ऐसे ही लॉन्ग चेन में अरेंज होते हैं. और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. Actually, generalized structure of protein, which is also means that primary structure of protein. Generalized structure of protein, which simply means that primary structure of protein. अभी प्रोटीन की अलग-अलग फोल्डिंग भी होती है. जैसे प्रोटीन फोल्ड करता है अपने आप में, तो उसमें अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट तैयार होते हैं, जिसे हम जनरली बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर. फिर उससे और फोल्डिंग के कारण उसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं. वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो दिस इज अप टू द जनरली यू कैन से जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. नाउ व्हाट इज अवर यू कैन से रेसिड्यू. कभी नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रेसिड्यू. सो आई टेल यू सिंपली, फॉर एग्जांपल दिस इज अ यू कैन से दिस marker is the amino acid and this is water. Marker is the amino acid and this is water. If you remove water from the amino acid, then component of amino acid without water is known as a residue. Component of amino acid without water is known as a residue. I'll give you one standard example. Hemoglobin, Hb. Hemoglobin have 139 amino you can say acid residue. Hemoglobin have 139 amino acid residue. It means अगर हीमोग्लोबिन प्रोटीन में से अगर वाटर को हाइड्रोलाइसिस करके निकाल दिया जाए तो कितने रेसिड्यू बचते हैं, कितने अमीनो एसिड बचते हैं? तो आंसर है 139. और हीमोग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? आंसर इज आल्सो सेम 139. So now moving towards a classification of protein.
Now protein is generally fall under only two categories. These are the simple protein and these are the conjugated protein. अभी simple protein का मतलब क्या होता है? What is simple protein? The protein which is only and only having amino acid, nothing extra, then it is called as a simple protein. And if a protein is having an amino acid plus non-protein part, we call it as a amino acid which is having non-protein part, we call it as a non-protein component. That is known as a conjugated protein. That is known as a conjugated protein. For example, in simple protein, there are two examples. Histone, which is found in which is found in chromosome, and second one is zen protein, which is found in males. Okay, तो अभी simple protein क्या होता है? Simple protein are only made by the amino acid. They are not having any non-protein part. Non-protein part का एक specific नाम भी है. That is known as a non-protein component, or you can say prosthetic group. अगर आपने कहीं पे ये word सुना होगा prosthetic group, तो prosthetic group का मतलब क्या होता है? Prosthetic group means non-protein part. I'll show you example. Like a phosphoprotein. तो phosphoprotein है ना, दो चीजों से बना हुआ है. One is phosphate and plus protein. One is phosphate plus protein. तो प्रोटीन तो नॉर्मल पोर्शन हो गया, उसमें एक्स्ट्रा जो एडिशनल कंपोनेंट है वो है फॉस्फेट. तो फॉस्फेट को हम क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप. और ऐसे ही अगर सिंपल प्रोटीन देखा जाए तो सिंपल प्रोटीन में कोई भी एडिशनल नहीं होता. सेकंड वन ग्लाइकोप्रोटीन. तो वैसे ही यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है और दूसरा कंपोनेंट है ओरिजिनल, दैट इज प्रोटीन. से फॉर एग्जांपल सल्फोप्रोटीन. तो यहाँ पे सल्फर हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा कंपोनेंट हो गया प्रोटीन. सेम वे न्यूक्लियोप्रोटीन. तो न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या हो गए? प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा कंपोनेंट जो है वो है फुल प्रोटीन. सो दिस इज सिंपली सिंपल प्रोटीन एंड यू कैन से कंजुगेटेड प्रोटीन. तो फिर से मैं बता देता हूँ सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या डिफरेंस है. सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड होते हैं, और कंजुगेटेड प्रोटीन वो होते हैं जिसमें प्रोटीन तो होते ही उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी ऐड होता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. जैसे लिपिड में नॉन लिपिड पार्ट को हम बोलते हैं एडिशनल ग्रुप, सेम वे प्रोटीन में नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं. Proteins found in you can say human being. Protein found in human being. तो सबसे पहले ये चीजें कुछ देख लो. सबसे पहले प्रोटीन एज एंजाइम. एग्जाम्पल है उसका अमाइलोस. You might be heard the sentence that all enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. All enzymes are protein, but all enzymes are not protein. So I'll clarify this in your mind. All enzymes are protein. Why all enzymes are protein? Because there is a definition of enzyme. Enzyme is nothing but any proteinaceous substance. Enzyme is nothing but any proteinaceous substance which is made by amino acid. अगर एंजाइम के अंदर भी अमीनो एसिड है और प्रोटीन के अंदर भी अमीनो एसिड है, तो ये क्लियर हो गया कि एंजाइम अमीनो एसिड मतलब एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. तो आधा सेंटेंस ये क्लियर हो गया. अभी दूसरा आधा सेंटेंस, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट नोन एज एन एंजाइम.
because all enzyme has a cutting action. All enzyme has to cut something, like a starch cutted and turned into the maltose with the help of amylase enzyme. With the help of amylase enzyme. So all enzyme do the cutting activity, breakdown activity. But all protein do not do like that. Like a myosin is a protein found in heart, responsible for contraction of heart. But this protein do not do any activity like a cutting. तो अमाइलेज जैसे स्टार्च को कट करता है, ऐसे हीमोग्लोबिन कोई मॉलिक्यूल को कट नहीं करता है, ना यू कैन से मायोसिन किसी को कट करता है. तो सभी के सभी प्रोटीन एंजाइम जैसे काम नहीं करते, यस, लेकिन सभी के सभी एंजाइम अमीनो एसिड से बने होते हैं. एंड दैट इज व्हाई इट इज क्लियरली प्रूव दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम. सो अमाइलेज एंजाइम ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं. सेकंड वन इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन. अभी स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? से फॉर एग्जांपल इलास्टिन, केराटिन, मायोसिन. Elastin protein is generally present in all connective tissue and it is responsible for contraction like activity. Keratin protein is generally found in our nails, found in our skin and found in our you can say epidermal muscle. And myosin protein is present in heart and it is responsible for contraction and relaxation, or you can say rhythmicity of a heart. So all these are the structural protein which gives a structure to our body. You can say defensive protein. Defensive protein. I'll give you an example of defensive protein, that is nothing but antibody. In short, it is you can say mentioned as AB, antibody. Now what is antibody? Generally when any antigen enter in our body, generally in any antigen enter in our body, like अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ जाता है, लाइक साल्मोनेला टाइफी, तो हमें टाइफाइड हो जाता है. तो उस टाइफाइड के बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारी बॉडी में जो इम्यून पावर प्रोड्यूस होता है, उस इम्यून पावर को हम बोलते हैं एंटीबॉडी. और वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी को डिफेंस करते हैं. इसके लिए हमने उनको क्लासिफिकेशन में डाला हुआ है डिफेंसिव प्रोटीन. ये सभी के सभी जो प्रोटीन है उनको क्लासिफिकेशन में हमने उस तरह के क्लासिफाइड किया हुआ है जैसे उनका रोल है. Antibody is a type of a protein which is produced in our body to kill antigen, and this is defending our body. That's why we have categorized them as a defensive protein. Now fourth one, transport protein. Fourth one, you can say transport protein. Example of transport protein. Example of transport protein is a HB, means hemoglobin, and second one is the myoglobin. Hemoglobin and myoglobin. हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में ज्यादा फर्क नहीं. मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का ही टाइप होता है. हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ यू कैन से आयरन कंटेनिंग पिगमेंट which is red in color and it rotates in our blood. And myoglobin is a type of a pigment which is iron containing red color pigment and it basically rotates inside our muscle. तो डिफरेंस क्या है? हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है और मायोग्लोबिन है ना मसल में पाया जाता है. मायो वर्ड आ गया मतलब आप गेसिंग कर सकते हो, इट इज रिलेटेड टू द मसल. सो ये बेसिकली एक ऐसे प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. प्रोटीन एज अ एंजाइम अमाइलेज, स्ट्रक्चरल प्रोटीन इलास्टिन, केराटिन, मायोसिन, डिफेंसिव प्रोटीन एंटीबॉडी एंड यू कैन से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हीमोग्लोबिन. तो ये कुछ प्रोटीन है. आप ये भी दे सकते हो प्रोटीन एज हार्मोन. प्रोटीन एज हार्मोन. Example देखते हैं इंसुलिन. Now we know that insulin is a type of hormone which is secreted and you can say produced from the pancreas, and this insulin is responsible for maintaining our sugar level. When your sugar level is high, then this insulin bring the sugar from high to the normal. But insulin is also made by the amino acids, so it is also classified as a protein. So dear students, आज के टॉपिक में हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन देखा, हिस्ट्री देखी कि बर्जेलिया साइंटिस्ट ने प्रोटीन को कैसे डिस्कवर किया था, एंड वी आल्सो डिस्कस जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोटीन, जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड
and you can say classification of protein and some example of protein. I hope so you like my video और आपको मेरा वीडियो अच्छी तरह से पसंद भी आया होगा. Dear students, मैं YouTube पे 5-5, 7-7 मिनट के ज़्यादातर वीडियो नहीं डालता हूँ. मेरा वीडियो मोस्ट प्रोबेबली पूरा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है. तो अगर कोई हायर स्टैंडर्ड की कोई बड़े सिटी में, अगर मेट्रो सिटी में कोचिंग अगर नहीं ज्वाइन की हो और आपको घर पे बैठ के भी पढ़ना हो तो यू कैन स्टडी. आप सीधा बुक निकाल के बैठिए और बुक्स में से देखिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आपको इजीली समझ में आ जाएगा. पहले आप वीडियो प्रॉपर्ली देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको पसंद आएगा. एंड जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको डेफिनेटली पसंद आएगा. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए. जैसे आप बेल आइकन को दबा दें तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके मोबाइल पे, आपके स्क्रीन पे, लैपटॉप पे आपके सामने होगा. थैंक यू सो मच. गुड लक.